Assalamu alaikum students. So we were on our lesson 2, The Ransom of Red Chief. Let's start our reading from page 17 and see that what this kid is going to do with these kidnappers. Just at daybreak, सुबह होते ही I was awakened by awful screams from Bill. मैं बिल की अजीबोगरीब चीखों से जागा. I jumped up to see what the matter was. मैं उछलकर उठा ये देखने के लिए कि मसला क्या था, मामला क्या था. रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट. रेड चीफ बिल के ऊपर बैठा हुआ था. होल्डिंग हिम बाय द हेयर, उसे बालों से पकड़ते हुए. इन हिज अदर हैंड, उसके दूसरे हाथ में, ही हैड द शार्प नाइफ, एक तेज़ छुरी थी. एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स स्कैल्प, और वो सीरियसली बिल के सर के जिल्द को उतारने की कोशिश कर रहा था. एज he had promised the evening before, जैसा कि उसने पिछली शाम वादा किया था. I got the knife away from the kid, मैंने बच्चे से छुरी दूर की. and made him lie down again, और उसे दोबारा लिटाया. but from that moment, लेकिन उस लम्हे से, Bill's spirit was broken, बिल का जोशो जज्बा टूट चुका था. he lay down on his side of the bed, वो बिस्तर की अपनी साइड पर लेट गया. but he never closed an eye again, लेकिन उसने दोबारा अपनी आंख बंद न की. इन स्लीप, नींद में. एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस, उतनी देर तक जब तक वो लड़का हमारे साथ था. एंड इट ऑफुल सैम, सैम क्या ये अजीब नहीं है? नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प लाइक दैट बैक, कोई भी इस छोटे शैतान को वापस ले जाने के लिए रकम नहीं देगा. हिज पेरेंट्स विल, उसके वालिदैन देंगे. सेज आई, मैं कहता. I went to the top of the little mountain, मैं उस छोटे पहाड़ के टॉप तक गया. and looked around, और इर्द गिर्द देखा. over towards summit, summit की तरफ. I expected to see a search party, मैं एक सर्च पार्टी को देखने की उम्मीद करता था. but what I saw was a peaceful landscape, लेकिन मैंने एक पुरअमन मंजर देखा. perhaps शायद, says I to myself, मैंने खुद से कहता. it has not yet been discovered, ये अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया, या इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हुआ. When I got to the cave, जब मैं गार में वापस आया, I found Bill backed up against the side of it, मैंने बिल को इसकी एक साइड के साथ पाया. breathing hard, मुश्किल से सांस लेते हुए. and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut, और वो लड़का नारियल के साइज़ के जितना पत्थर के साथ उसे मारने के लिए डराते हुए. He put a red hot boiled potato down my back, उसने एक सुर्ख गर्म उबला हुआ आलू मेरी पुश्त पर रखा. explained Bill, बिल ने वजाहत की. and then mashed it with his foot, और फिर अपने पाँव के साथ उसे मैश किया. and I hit him, और मैंने उसे मारा. I took the rock away from the boy, मैंने लड़के से पत्थर लिया. and kind of patched up the argument, और एक तरह से उस बहस को हल किया या ख़त्म किया. I'll fix you, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, says the kid to Bill, बच्चे ने बिल से कहा. by and by Bill calms down and says, साथ साथ बिल पुरसुकून होता है और कहता है. Sam, you won't go away and leave me here alone. Sam, तुम अब नहीं जाओगे और मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ोगे. Will you, क्या तुम जाओगे? I went out and caught that boy and shook him until his freckles rattled, मैं बाहर गया और उस बच्चे को पकड़ा और उसे इस कदर झंझोड़ा कि उसके फ्रैकल्स लर्ज उठे. इफ़ यू डोंट बिहेव, अगर तुम बिहेव नहीं करते, सेज आई, मैं कहता. आई टेक यू स्ट्रेट होम, मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा. नाउ बी गुड, और अब अच्छे बन के रहो. आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स, मैंने उसके और बिल के हाथ मिलाए. देन आई टुक बिल असाइड, फिर मैं बिल को एक तरफ ले गया. एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कॉफ, और उसे बताया कि मैं पॉपुलर कॉफ जाने वाला हूँ. A little village 3 miles away, 3 मील दूर एक छोटा गांव. To find out what reaction the kidnapping had caused, ये जानने के लिए कि इस अगवा ने या इस अगवा से क्या रद्द अमल आया है. You know, तुम जानते हो सैम, says Bill, बिल कहता. I have stood by you in earthquakes, fire, floods and cyclones, मैं ज़लज़ले, आग, सैलाब और तूफ़ानों में तुम्हारे साथ खड़ा रहा. I never lost my nerve, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी. yet till we kidnapped that kid, यहाँ तक
یا جب تک ہم نے اس لڑکے کو اغوا کیا. You won't leave me long with him. تم زیادہ دیر مجھے اس کے ساتھ نہیں چھوڑو گے. Will you؟ کیا تم چھوڑو گے؟ I'll be back soon. میں جلد واپس آؤں گا. Says I. میں نے کہا. You must keep the boy amused till I return. میرے واپس آنے تک تمہیں بچے کو خوش رکھنا ہوگا. Let's write the letter to Mr. Dorset. چلو مسٹر ڈارسٹ کو ایک خط لکھتے ہیں. Demanding the ransom and how it should be paid. تاوان کا مطالبہ کرتے ہوئے اور اسے کس طرح پے کیا جانا ہے. Bill and I wrote it while Red Chief strutted up and down. Bill اور میں نے اسے لکھا جب کہ ریڈ چیف اوپر نیچے اکڑ کر چل رہا تھا. Guarding the cave. غار کی حفاظت کرتے ہوئے. Bill begged me cheerfully to make the ransom $1,500 instead of $2,000. بل نے آنسوں کے ساتھ درخواست کی کہ تاوان کو 2000 کی بجائے 1500 کر دیا جائے. So to relieve Bill. لہٰذا بل کو پرسکون کرنے کے لیے I agreed. میں مان گیا. And the letter was something like that. Ebenezer Dorset Esquire. We have your boy. تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے. It is useless for anyone to attempt to find him. اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا کسی کے لیے بھی useless ہوگی. We will only return him if you meet these terms. ہم اسے تبھی واپس کریں گے اگر تم ان شرائط پر پورا اترو گے یا ان شرائط کو پورا کرو گے. We demand $1,500. ہم $1500 کا مطالبہ کرتے ہیں. The money to be left at midnight tonight at the same box as your reply. رقم تمہاری جواب کے طور پر آج رات یا آج آدھی رات اسی باکس میں چھوڑنی ہوگی. At the lawn tree. اس اکیلے درخت پر. Send your answer by messenger at 8:30 tonight. آج رات 8:30 بجے اپنا جواب میسنجر کے ذریعے بھجواؤ. If you attempt any treachery. اگر تم نے ہوشیاری کی کوشش کی یا ہمارا بھروسہ توڑا. You will never see your boy again. تم کبھی اپنا لڑکا دوبارہ نہیں دیکھو گے. If you pay the money. اگر تم رقم ادا کرتے ہو. He will be returned to you safe and well. یہ تمہیں باحفاظت واپس دے دیا جائے گا. These terms are final. یہ شرائط فائنل ہیں. And if you do not accede to them. اور اگر تم ان کو قبول نہیں کرتے. No further communication will be attempted. مزید کوئی رابطہ نہیں کیا جائے گا. And the letter was by 2 desperate men. So I think that's enough for today. Let's learn meanings of some of the difficult words. Accede, to agree to a demand. ایک مطالبے کو قبول کرنا. Provisions, food, drink and equipment. خوراک, پانی اور سامان. Treachery, betrayal of trust. بھروسے کو توڑنا. So students learn the meanings. That was all for today. Thank you so much.